टेक्निक को हमने लास्ट वेबिनार में एक्सपीरियंस भी किया था और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग शामिल थे उन्होंने इसके फ़र्क को उसी मीटिंग में इतनी स्ट्रांगली फ़ील किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक टुगेदर अगेन टू एक्सपीरियंस दिस wonderful journey of self improvement and internal development and psychological reconstruction through energy psychology. तो अब हम अपने मुकम्मल ध्यान के साथ टर्न करते हैं सर इम्तियाज की तरफ. Inshallah, we will learn something wonderful today. Ji, thank you, Fatma, for saying all those good things about me. And I welcome all of you today on this webinar. It's entirely my pleasure to be speaking to all of you, and I hope you can see me right now. And last time हमने बात की थी about relationships. And it was really not relation, it was stress management, but it turned out into relationship because so many people came into it regarding their own relationship issues. तो वो एक relationship का ही webinar बन गया था from stress management. So today we are formally having a webinar on relationships. It's happy, the topic is happy relationship as it is. And इसका format ऐसा होगा कि I'll speak for some time and then I'll ask you questions. You're free to ask any questions. We will discuss openly whatever your issues are, and we will try and find some solutions to it. And then in second part, we will do 1 minute wonder, OMW tapping system, and we will see what can this energy tapping do for us and how does it work for us. Last time, people had some good experience out of all this whole seminar. And at the end, when we finished, I was very pleasantly surprised that the whole screen was full of hearts. And it seemed as if some red color balloons are flowing through the whole screen. And it was a pleasure to see everybody appreciating the whole webinar. And I hope, inshallah, today also the whole webinar will go off very nicely. Some of you must have been there last time, and some of you may be new. All of you are welcome to these webinars. We intend to hold such webinars in future as well, maybe once or twice a month. And and then we also hold the free group healing sessions at Connect Workspace. And I'm sure some of you who are today in the webinar are there in that free group healing sessions as well. That has its own uniqueness. The whole thing is quite unique, the group healing session. I don't think anyone in Pakistan is doing something like this because in that session also we have discussion, we have experience of a real healing in that real healing, and we have meditation also, and we freely discuss so many wonderful things. The whole idea is to share the knowledge and to grow in life and be happy in life and to contribute for one another. And when we do something for others, we nature the Allah Ta'ala and somehow from unknown resources, you also get benefited. I can see so many people joining rapidly right now as well. So that's very nice. See, everyone who comes here will benefit in some way, I'm sure of it. Anyway, during that question answer session, I will be open to any suggestions from you or any questions from you regarding relationships today. At the end of this month, we're having a workshop on 1 minute wonder also. That's something amazing. And I don't want to talk much about it because Fatma will let you know something about it. She's a graduate of 1 minute wonder.
at the end of this webinar. So talking about the relationships, so we all are social animals, human beings. We all want to have relationships, and we all want to have happy relationships. So happy relationships are from one to the other person to the other person, between two persons, between families, between groups, between corporates, between any number of people that they be around. So the idea is to share energies, share ideas. And I'm very fond of this word, energy. Everything is energy, our mind, our thoughts, our emotions, our body, our spirit, everything is energy. Any material thing that you see all around you, everything is energy. So if there is happy relationship, then there is happy energy, happy vibrations between the persons. Everything vibrates. When we are in happy mood, when we are in happy vibrations, at that time we feel good, we feel better, we feel light, and we want to rise. Our spirit rises up. And on the other hand, when we are in low mood, when we are unhappy, when we are depressed, when we are hurt, at that time, our mood goes down. And that is unhappy state of mind. And that energy at that time is low. It's heavy. It pulls you down. And you see, we can't really, don't have energy within our body. We are low in energy within us. So that is one thing, uh, you see, between the difference between a happy energy and an unhappy negative energy. Negative energy pulls us down. So the idea is to live happily. And how can we live happily? We need to become self-aware. Awareness, what we are, how we are, what is our mood, what is our thought, why our relationship is the way it is, how is it going. And last time, if I give you an example, there were a number of people who said so and so is not a good person, not giving enough time, and she's not paying full attention and not happy really about the whole thing. And then what to do about it if someone is not happy in a relationship? So we will find out ways and means now. We will talk about it, what to do, how to maintain a good, happy relationship. Most of the time, this is life. And in life, there are ups and downs, there are plus and minuses. In life, there are hot things, sour things, sweet things, and neutral kind of things. So all kinds of things are there. What is important is not what really happens. What is important is how we take it, what we do when it is happening. And last time I shared a very good exercise with you regarding relationships. Do you remember what it was? Anybody who remembers what it was? Huh? I told you A, B, C, right? A is you, A is you, Yes, B sir. is the ABC other person. triangle. Yes. B is the other person, and C is a neutral person in between both, who is neither A nor B. And he is a neutral judge. So A means your point of view, B means the other person's point of view, and C means neutral. And you look at the whole thing as a neutral. When you say A is saying B is bad, B is wrong, there are problems with B. All right, fine, there are problems from your point of view. Now, when we say A
you are complaining against B and B is wrong, of course, there are certain wrong things with B. Now, put on the shoes of the B. Go into the map of the world of the B. Become B for a while, for some time, and think and feel from B's point of view, right? And when you feel and think from B's point of view, you start looking at the whole relationship differently. You start understanding the other person's point of view then. And you feel different, entirely different, because now you have other person's point of view. And that is exactly what we want you to understand. Your point of view and the other person's point of view. If you only say, I am right, then B says, I am right, then who is right? Both of you are right, or both of you are wrong. So then we turn to C, neutral person sitting in between from or at a distance and looking at both A and B. And when you look at both as a neutral judge, you have an idea what I am doing, what is my responsibility, what is my role in this conflict, what is my role in this whole issue that is happening. And then you see the other person's role. And as a judge, you advise both yourself and the other person, and you become wiser. And that is how your relationships, when you think in this way, relationships keep improving and improving. Another very important thing that I would like to talk today is before we start having some discussion, I lay down some few points in a very brief way. Otherwise, each subject does deserve a long discussion. The first point is communication, assertive communication. Now we communicate with the other person. The three ways of communicating. One, be passive. Don't say anything. Let the other person do whatever he or she does, and you don't react. You are just passive, and you are a doormat. And everybody is stepping over you and moving on, stepping over you and moving on. And you're suffering and suffering and not really reacting to it and weeping and unhappy about it. So being passive is the wrong. The other way is aggressive communication. Aggressive communication. Aggressive communication means that you are angry. You react angrily, maybe even physically abusive, verbally abusive, and dominating. Again, it is hurtful. It not only hurts the other person, it hurts the person who is getting angry. It hurts the person who is getting aggressive, surely. So, this type of communication is wrong. Again, so what is the best form of communication then? What is the best form of communication? Assertive communication. What is assertive communication? Assertive communication means that you express your point of view. You say what you want to say. At the same time, you don't get angry and neither are you passive. Then how do you express yourself? This is a skill. In relationship, expression is absolutely essential. Giving your point of view is essential. Express it in a way which is acceptable, dignified, polite, respectful for the other person. Give your point of view respectfully in a way
which is acceptable to the other person. That is assertive communication. You must express yourself in this very way. Right? Very briefly about assertive communication. And now I would like to tell you about conflict resolution, how to resolve the conflicting issues, the irritating issues between people. And I just told you that exercise of ABC, understand the other person. Again, give your point of view assertively. Let the other person speak and prompt them that they also speak assertively only on the essentials. No blame gaming. Blame gaming means that you are avoiding responsibility. Now, responsibility is the opposite. I repeat, responsibility is the opposite of blame gaming. In blame gaming, you are taking a shortcut. I am okay. The whole problem is with the other person to throw the blame. What the other person does is throws the blame onto you, and then the game goes on, the badminton game goes on. You throw the blame across the net, and the other person throws the blame across to you. So, what's the point? It never stops. The conflict increases, it expands. Let the other person speak, listen, understand, and want where do you want to go? Determine what is the objective, what is the mission, what is the aim of this relationship. So have a joint aim, work together jointly on a mission of the relationship, what both of you want. Maybe you can write down independently. Okay, one person says, this is what I want from this relationship. The other person also writes down independently, okay, this is what I want from the relationship. And then both of you have written down your own points of view, and they're good. Then sit down, discuss, and make a joint mission statement of the relationship. And if there are conflicts, again, resolve them by understanding the other person, listening to the other person, and talking assertively, giving your point of view. That's the way to move forward. And in that whole process, self awareness of what is happening, each person becomes of their own thoughts. What is self awareness? Own thoughts and emotions and behavior. You become aware. Many people are not aware. Most of the people are not aware of their own thoughts, emotions, and behavior. If there is a change, if you want to change, if you want to improve, then what is the first thing to do? Be aware. Be aware of yourself. What am I thinking? And why am I thinking like this? Could I be doing something else? Could I be thinking in some other way? Why am I behaving in this way? Could I be behaving in a different way? Why not? Go ahead, behave in a different way. And the behavior is born through thoughts and emotions, primarily thoughts and emotion, and then resulting in the behavior. So self awareness is something of prime importance. Another, I've just told you to take responsibility instead of blame game, right? Another very important point is in relationships, normally we assume things. Okay, so and so has said this, and it must be for this reason, and it must be this intention, and this must be thinking, and this is because I am like this, and you assume and assume and assume things. So assumptions in relationships are never good.
they don't prompt good relationships. वो हमेशा प्रॉब्लम्स डालती है ऐसा, और वो रिलेशनशिप्स को खराब करने में काफी मदद करती है ऐसा। तो assumption हम क्यों करें, क्यों ना क्लैरिफाई करें, सिर्फ perspective क्यों ना कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, but understanding, communicating properly. Then lastly, before I hand over to go over to the discussion, अब मैं ये कहूँगा कि हमें सेल्फ एस्टीम का भी अपना ख्याल करें कि मेरी सेल्फ एस्टीम करें, व्हाट डू थिंक ऑफ माई सेल्फ। जिन लोगों की लो सेल्फ एस्टीम होती है, लो सेल्फ एस्टीम, वो लोग बहुत सेंसिटिव, सेंसिटिव, किसी ने थोड़ा सा ये कह दिया, जरा सा कुछ चीज लगी, चुप गई एकदम, और वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है, और वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन चली जाती है, और वो फिर पीछे से भी लोगों को वो इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सो सेल्फ एस्टीम का अपना ख्याल करना है कि आई एम गुड, अपने सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करें, बड़ा करें, और उसको हाई लेवल पर ले जाए, अपने आप को अच्छा समझें, अपना जो सेल्फ इमेज है उसको बढ़ाएं अपने सामने, अपने लिए, अपनी जो आपको कैसे बढ़ाने का तरीका है उसका बेस्ट तरीका यही है, मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। अपने आप को क्रिटिसाइज करने की बजाय, जो लोगों की सेल्फ एस्टीम लो होती है वो अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए वो लो सेल्फ एस्टीम चले जाते हैं। इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि अपने आप को एप्रिशिएट करें। आई एम गुड, मेरा नाम इम्तियाज है, इम्तियाज इज गुड, बैठ कर इम्तियाज यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, इम्तियाज वाओ सुपर, you did this thing today, wonderful, I like you, Imtiaz. And when you look into the mirror, look at yourself in your eyes and say, I like, अपना नाम लेके कहें, I like you, and just raise your self-esteem. And before you go to sleep at night, say good things about yourself. Count good things of what you did during the day. Raise your self-esteem. Right? Okay. Very briefly, I have given some, laid down some, foundation for our discussion. And now discussion is open. Everybody, anyone who wants to speak first is welcome. And we can discuss first, and then we will go for solutions later on. Right? Open to discussion. Right. Any questions? सर, मेरा क्वेश्चन था कि इतना भी अपने आप को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट का लफ्ज तो नहीं, बट इतना ज्यादा भी खुद को नहीं कहना चाहिए कि अपने आप से ही बंदा ऑब्सेस्ड हो जाए। अपने क्रिटिकल एनालिसिस तो अपनी जात के साथ होना चाहिए ना, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, सेल्फ एवेल्युएशन होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा दिन मेरा गया, अपनी हैबिट्स के बारे में। जी आयशा, आप ठीक कह रही हैं, सेल्फ एवेल्युएशन अपनी जगह जरूरी होती है, और जो आपने गलतियां की तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट भी लानी चाहिए उसी एवेल्युएशन के जरिए। लेकिन हम सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं, इट इज विद रेफरेंस टू सेल्फ एस्टीम। जो सेल्फ एस्टीम है वो जब सेल्फ क्रिटिसिज्म ज्यादा हो रहा होता है तो वो हम अपने आप को लो लिख जा रहे होते हैं, तो उसके लिए हम अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे ताकि हम अपने आप को अच्छा समझे। देखें, जो पर्सनैलिटी की बुनियाद है, जो परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद है, जो आपके अंदर लाइफ को अच्छी तरह फेस करने की बुनियाद है, दैट इज योर ओन सेल्फ एस्टीम। एक शख्स अपने आप को अच्छा समझता है तो he can or she can withstand
any amount of difficulties also, any हम्म, amount of criticism also. जी और मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। एक जमाने में कुछ साल पहले मैं मेडिटेशन टीच किया करता था इन ट्वाइस अ मंथ इन अ होटल। वो 10 साल तक आई केप्ट टीचिंग दैट मेडिटेशन ट्वाइस अ मंथ। तो बहुत लोग नए नए आते थे हर दफा उसमें, और चूंकि वो ओपन होता था टू पब्लिक, आई यूज्ड टू जस्ट एंड इट वाज लाइक फ्री, ऑलमोस्ट लाइक फ्री। एवरीवन वाज पेइंग ओनली फॉर देयर कुकीज एंड टी एंड दैट्स इट। और बहुत सस्ता था उस जमाने में। तो anybody could walk into that meditation thing, and we used to have 40-50 people, or maybe 35 sometimes. तो उसमें लोग नए लोग होते थे, they would ask odd questions. कई दफा वो ऐसे भी सवाल करते थे which would hurt me, वो मेरे पर पर्सनल अटैक्स भी कर लेते थे। So that's okay. और मैंने अपने आप को ये देखा कि मैं जब इस तरह अगर कोई someone says something which hurts me, तो मेरे पास चॉइस है। चॉइस ये है कि मैं हर्ट हो जाऊं, मैं ओवर थिंकिंग में चले जाऊं, मैं उसके ऊपर ब्रूड करना शुरू कर दूं, ये कहा ये कहा, ये वो सेल्फ एस्टीम लो की निशानी। या मैं अपने आप से कहूं, इम्तियाज ठीक है ना, देयर इज नथिंग, नो वन इज परफेक्ट, आई कुड बी रॉन्ग, थैंक यू दैट पर्सन, लेट्स से उसका नाम अकरम है, एनीबॉडी, थैंक यू अकरम, यू टोल्ड मी अबाउट दिस, यू पुट मी वाइज, थैंक यू, I learn from this, and I take it as a learning experience, and I move on, and that's it, finish. So any such thing, relationship में भी अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है और हम ये सेट माइंडसेट रखें कि it's a learning experience, wow, wow, it will keep improving. I can assure you. Have I answered you, Aisha? सर उस्मा बात कर रही हूँ। सर ऐसा है कि जैसे मेरा और मेरी फ्रेंड के दरमियान कभी कोई मसला होता है, ऑलवेज मैं सॉरी या आप कह लें कि मैं डाउन होती हूँ और मैं कहती हूँ कि मामला नहीं, दोस्ती को बरकरार रखना, इट्स ओके, ठीक है? तो वो नहीं करती पहल, देन इसमें क्या करें फिर? कौन बोल रही हैं आप? उस्मा, उस्मा सर। जी। ओके उस्मा, देखिए ऐसा है, ये तो आपकी फ्रेंडशिप की एक स्टाइल है। कोई भी ये जो दो जनरल लोग, भी अगर हर बार हम ही कर रहे हैं पहल, कोई नहीं कर रहा, तो ये भी तो गलत है तो ना? ठीक है, ठीक है। देखिए रिलेशनशिप जो होती है ना, वो होती है रिलेशनशिप। जी, ठीक है। मैं फिर से कहता हूँ, रिलेशनशिप जो होती है ना, वो होती है रिलेशनशिप। हाँ, उसमें सही या गलत जो है ना, वो थोड़ा बहुत कम ही होता है। सो लॉन्ग कोई ऐसे ड्रास्टिक रूल्स ना टूट रहे हो, बाउंड्रीज बाउंड्रीज भी होनी रिलेशनशिप में जरूरी होती है। हुँ, और हुँ। वो ना खराब की जा रही हो, वो ना कोई क्रॉस कर रहा हो बाउंड्रीज को। और जी, सो लॉन्ग एज, जैसे आपने कहा उसने पहल नहीं की, मैंने पहल कर ली, इसमें आपका अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक इंसान चल रहा होता है। और हुँ, ये ठीक है, तो लॉन्ग एज यू रिमेन फ्रेंड्स, पहल कर ली तो क्या हुआ, अपने ईगो को ना लाए बीच में, ठीक है, इट्स ऑलराइट। और बहुत दफा क्या होता है कि जो हमारा ईगो होता है कि हुँ, हुँ। मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, मैंने यूं कहा, तुमने मुझे उस वक्त रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, वो आप एग्ज़ैक्टली। देख लीजिए। ईगो अच्छा भी होता है, हमें आगे भी लेकर जाता है, और हाँ, कहीं हमें प्रॉब्लम्स में भी डाल देता है। तो उसको भी बैलेंस करके रखना, ठीक है, ठीक है। सही। एनीवन Yeah, एल्स? Aisha, Ayub जी and अस्सलाम Mohammed have वालेकुम raised आपको। their hand. जी आयशा आप बोलें। जी अंकल मेरा ये क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे आपने कहा कि आप असर्टिवली अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करें और आप कम्युनिकेट करते हो फॉर एग्जांपल कि आपको टाइम दें या आपको अफेक्शन दें और वो उसमें लैक कर रहे हैं और फिर वो कमिटमेंट भी करते हैं और फिर मल्टीपल टाइम्स वो सेम मिस्टेक वो रिपीट करते हैं और वो आपकी बात को समझ नहीं रहे या इसको एक्नॉलेज नहीं करते कि अच्छा लगता है कि सिर्फ अगर आप साथ बैठे हुए हैं तो आप टाइम दे रहे हैं लेकिन एक्चुअल टाइम देना वो नहीं होता। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं जब आपका दूसरा आपकी बात नहीं समझ रहा जो आप कन्वे कर रहे हैं? जी हाँ, ये ऐसा एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन है
to number of lady partners, spouses, कि हमारे जो है सेकेंड हाफ वो हस्बैंड्स या ऐसे रिलेशंस में वो हमें टाइम नहीं देते, एंड दे आर टू बिजी, ऑफिस से आए, काम से आए भी लेट, और आके फोन पे लग गए या टीवी देखने लग गए, और हम जो इंतजार कर रहे हैं जिन पर हमें टाइम ही नहीं दिया। तो और भी बहुत सारी बातें होती हैं, वो सुनते नहीं है बात। तो क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना बहुत जरूरी है इन रिलेशनशिप में। एक दूसरे को सुनना, साथ बैठे रहना, कुछ भी ना करें तो साथ बैठे हो, एनर्जी शेयरिंग है आपस में, और क्वालिटी एनर्जी शेयरिंग है, अच्छी एनर्जी शेयरिंग है, ये जरूरी है। अब अगर एक पार्टनर नहीं कर रहा तो आप उस पार्टनर को, अब यहाँ पर सवाल हम आ रहे हैं कि हम करें क्या, वो एक और नेक्स्ट सिचुएशन में हम जाने, वो हम अभी करेंगे, हम उसके ऊपर अभी बात करेंगे। आप में से कोई एक वॉलंटियर आ जाएंगे और हम उनके ऊपर काम करेंगे, और बाकी आप सब हमें कॉपी करेंगे, हम दोनों, और अपने अपनी प्रॉब्लम सोचेंगे आप, और हर कोई अपनी प्रॉब्लम पे काम करेगा, मगर इधर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं और कोई जो एक वॉलंटियर होगा, हम आपस में दोनों काम करेंगे, एंड वी विल मूव टू अ सॉल्यूशन। एंड डू यू नो ऐसा क्या होगा? डू यू नो क्या होगा? कोई अंदाजा है आपको? आप शिफ्ट करेंगे फॉर एग्जांपल जो आप चाहते क्या हैं। क्या होगा कि आपके इश्यूज जो है, हम काम किसी और पे कर रहे होंगे, मगर हमने एनर्जी की बात की थी ना अभी, तो वो एनर्जी लेवल के ऊपर आप शिफ्ट हो रही होंगी, आपकी एनर्जी अपने अंदर से शिफ्ट हो रही होगी। क्यों? कि आप हमारे सारे इस एक एनर्जी का सिस्टम में आ चुके हो। जो हम काम करेंगे आप अपने साथ करिएगा, तो आप फिर देखिएगा किस तरह एनर्जी शिफ्ट होती है। हम लोगों की आपस की पूरा ग्रुप कितना बड़ा भी क्यों ना हो, उन सारों को एनर्जी शिफ्ट करने का वो उनको पता नहीं लगता, सब कॉन्शियस लेवल पे होता है। कॉन्शियसली हम अलग अलग हैं। ऐसा तो बहुत बात गौर से सुनिए, सिर्फ दो लोग जो इकट्ठे रह रहे हैं, या चार या पांच, या फैमिली सिस्टम है, या एक ग्रुप में कंपनी में 1000 लोग भी इकट्ठे रह रहे हैं, वो फिजिकली हम इकट्ठे हैं। एनर्जी लेवल पे पूरी कायनात, तो होल यूनिवर्स इज वन, all human beings are one. This is quantum physics की theory है, and it is correct. Science has proved it correct now. तो अब क्या है कि जब हम ग्रुप में हील करेंगे एक आदमी के साथ मिलकर, तो अभी हमारे पास 31 जितने इस वक्त भी ज्वाइन किए हुए लोग, तो उनको सबको फायदा होगा, and this will be amazing. So you just go along with us and see what happens. तो आपकी मैं इसके दूसरे का एक थोड़ा सा जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ कि अगर दूसरा आपका जो है वो स्पाउस है, ये तो जिसकी भी आप जिक्र कर रही है, वो आपको टाइम नहीं दे रहा, आपके साथ बात नहीं कर रहा, तो यू कैन टॉक टू द अदर पर्सन assertively. This is a skill which people do not know. वो हम कम्युनिकेशन में स्टक हो जाते हैं। तो रिलेशनशिप में जो बेसिक चीज है, दैट इज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन तो मैंने बता दिया था, एग्रेसिव, पैसिव और असर्टिव होती है, और उसके अलावा दो तरह की होती है ऐसा, दो तरह की। और एक होती है कम्युनिकेशन विद इन सेल्फ के साथ, सेल्फ टॉक, आई रिपीट, सेल्फ टॉक। और दूसरी होती है वन टू वन, वॉइस के साथ। जो सेल्फ टॉक की कम्युनिकेशन होती है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो बाहर का एटमॉस्फेयर बन रहा होता है हमारा, बाहर की दुनिया बन रही होती है, उसमें हमारी सेल्फ टॉक का काफी जिक्र होता और असर
होता है। छोटे से, अभी टाइम है हमारे पास, छोटे से एग्जाम्पल के साथ आगे चलेंगे। एक मेरे इसी तरह के एक सेशन में, वहाँ पे फ्री सेशन में हमारा, वहां पर एक लेडी आई, उन्होंने कहा एक फलां लेडी के बहुत खराब है, और इतनी 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 उसकी बुराइयां कर डाली 2-4 मिनट में। मैंने कहा ओके, अगर मैं उस लेडी से पूछूं कि आपके बारे में, वो भी मुझे ऐसे ही कहेगी। मैंने कहा कौन ठीक है कौन खराब है, एक बात। दूसरा मैंने कहा आप अपने दिल में उसके बारे में क्या कहती हैं? उसने कहा कि मैं अपने दिल में उसको ये सब बुराइयां बुराइयां बुराइयां, दुनिया जहान की बुराइयां मैं दिल में उसकी करती हूँ, जैसे मैं अभी बोल के कर रही हूँ। मैंने, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि जो आप किसी को दिल में इतना बुरा भला कह रहे हो, तो वो एक्चुअली आपके साथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत फ्रेंडली हो जाएंगे आपके, और आपकी बड़ी कम्युनिकेशन हो जाएगी अच्छी सी? पॉसिबल ही नहीं है, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तो है क्या कि हमें अपने सेल्फ टॉक को चेंज करना है, अपने आप को बताना है देयर आर सो मेनी अदर वेज जिससे कि हम अपनी एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं, एंड दैट वी डू इन आवर वर्कशॉप्स, इन आवर वन टू वन रियल लाइफ सेशंस। तो उसके अंदर हम अपनी एनर्जीज को चेंज करना सीखेंगे। इस वक्त हम ओम डब्ल्यू टैपिंग के साथ अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वॉलंटियर करें या कोई क्वेश्चन पोज करें, वीडियो ऑन कर लें ताकि आपके साथ फुली एंगेज किया जा सके और आप भी उसको प्रॉपर्ली एंजॉय कर सकें। थैंक यू। अच्छा सर, हेलो, क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रही थी कि हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में भी अक्सर ऐसा होता है कि जो फीमेल हैं उनको ज्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ता है बनिस्बत के मेल्स, बिकॉज मेल्स आर वेरी लेस एक्सप्रेसिव एज कंपेयर टू फीमेल्स, एंड दे ऑलवेज वांट रीअश्योरेंस कि हमें रीअश्योर करते रहें अबाउट द हार्मनी ऑफ द रिलेशनशिप। तो इज इट नॉर्मल फॉर द लेडी टू एवरी टाइम वो झुके और वो हर वक्त पैचअप करने की कोशिश करे, कि दूसरी तरफ से भी उसको ये होना चाहिए, कोई ना सिग्नल मिलना चाहिए उसको कि वो रिलेशनशिप दूसरा शख्स भी उसके साथ उतना ही कॉर्डियल हो जितनी के वो हो रही है? जी, आपका नाम क्या है? समीन वकास, डॉक्टर समीन अच्छा, वकास। सुनील विकास, ओके, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। तो उसमें डॉक्टर समीन, ऐसा है कि होना तो दोनों तरफ से चाहिए, जो क्वेश्चन की बात, वही तो जी सबसे अच्छा होता है कि जब दोनों तरफ से। लेकिन अगर दोनों तरफ से नहीं है, तो जो रिलेशनशिप उससे अच्छी हो रही है, बस ठीक है ना। क्योंकि रिलेशनशिप में कोई ये नहीं, ईगो को मत आने देगी इसमें कि सिर्फ मैं ही करूँ तुम ना करो, तुम ही करो मैं यूँ। उसमें आप देख लें कि जहाँ आप कंफर्टेबल हैं, जहाँ वो। और मैंने अभी आपको बताया कि assertive terms, अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी बात कुछ करना चाहते हैं, गुस्सा कभी ना करें, टॉन्ट ना करें, ताना ना दें किसी किस्म का, माजी की किसी नेगेटिव चीज का रेफरेंस ना दें, उनके घर के पीछे वालों को कभी बीच में इन्वॉल्व ना करें, उनका कोई कसूर नहीं होता। जी और उनका, उनके बारे में अपने दिल में अपने पेपर ले लें, उनकी आपने बुराइयां लिखनी है, कुछ बुराइयां एक साइड पे लिख लें, पेपर के जी उसी पेपर के आगे पेपर के दूसरी तरफ उनकी अच्छाइयां लिख। जो बुराइयां हैं उनके ऊपर ओम डब्ल्यू से उनको अपने अंदर से परसेप्शंस को, एनर्जी के पैटर्न्स को, लॉस को वो निकाल। जो सही अच्छाइयां हैं वो अपने अंदर इंस्टॉल कर। जब आप, सही। यू आर एवरीथिंग, यू आर द पावर, यू आर एवरीथिंग। हम दूसरे आदमी को चेंज करने के लिए हम एडवोकेट करते हैं, ना हम कर सकते हैं, ना कोई कर सकता है। वो खुद चेंज हो आपके इन्फ्लुएंस की वजह से। आप जी ऐसे ट्रिगर कर जाएं, आप अपने बिहेवियर में ऐसे चेंजेस लाएं,
आप ऐसे इंसेंटिव दें उनको तो वो चेंज हो जाए, तो वो हो जाए एक हद तक yes। लेकिन जी आप डायरेक्टली जब उनको कहेंगे कि आपने ऐसे करना है ऐसे करना है, तो वो डिफेंसिव में चले, वो जी जी रिजेक्ट करें, वो चेंज नहीं होंगे फिर। और आपको जी फिर वो जितना आप परचेज करेंगे उतना वो रिसर्च करेंगे, व्हाट यू परचेज वो इंटरेस्ट व्हाट इट परचेज। इसलिए आपने उनको अपने आप के ऊपर काम करें और अपने आप को हैप्पी रखें, पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्स दें, फिर देखिए क्या होता है। इट्स ऑल जी अबाउट एनर्जी। एनर्जी के कैसे पैटर्न्स बने हुए होते हैं हमारे अंदर, ये सब जी देखिए, ऑल अबाउट दैट। ओके ठीक है। यस थैंक यू सो और मच सर माशाल्लाह डॉक्टर यू नो सो मच अबाउट ऑल दिस। थैंक यू। यस थैंक यू सर Okay. Okay, now is there any volunteer we can work together? All of the rest of you can join us in resolving that pattern. Any volunteer? Mohammed, would you like to volunteer? You had your hand up. Anyone who is volunteer can raise your hand and Fatma can pick it up. Actually, I wanted to ask the question. Okay, a question, yes. I wanted to ask you that you said that you should be aware about yourself, right? And you should be positive around people, even if they impacted you like negatively, right? But I want to You ask that कौन how बोल रहे could हैं? other Other? All right. जी जी अदर क्या कह रही है, फिर से कहिए, मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई। फिर से बताइए। hello, can I? हेलो, फिर से जी बताइए। So I wanted to ask you that how could we remain positive around आपकी बात, आपकी आवाज कट रही है बीच में से, थोड़ा सा आवाज आती है फिर कट जाती है। hello? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। Am I audible? फिर अभी आइए, फिर हाँ अभी आइए। Okay. So my question was that how to remain positive around people that actually drains your energy. And by drain, I mean that actually drain, right? That you could not process after that interaction or after that communication. And secondly, I read it somewhere in a book that you could not actually grow in an environment or heal in an environment that actually made you sick or actually made you to experience a setback in your life. So how would you shed light over this? अच्छा, फातिमा, मुझे इनकी बात पूरी तरह सुनाई नहीं दी। कैन यू हियर एंड एक्सप्लेन अ लिटिल टू मी? Yes, sir. Yes, sir. Adan has shared that she's asking कि अगर कोई ऐसा person है जो आपको बहुत drain करते हैं आपकी energy को, कि उनके साथ गुफ्तगू के बाद आप प्रोसेस ही नहीं कर पाते हो, आपका जैसे सिस्टम रुक सा जाता है, तो इन हालात में पॉजिटिव कैसे रहना है, अपनी एनर्जी को मेंटेन कैसे करना है और मूव फॉरवर्ड कैसे करना है? अदन, आई होप आई कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ व्हाट यू सेड. ओके, ठीक है। Yes, कदर, and वेरी I also गुड। want आई गॉट इट, that आई गॉट इट। ओके, आई गॉट I इट said कदर। that मैं how to live in आपको an environment that actually made you sick, or that's ठीक the है, real thing. How to आई गॉट योर पॉइंट कदर। ओके, अब आप सुनिए। कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, है कदर, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो वैसे होते हैं, जो जिनमें नेगेटिव वाइब्स होती हैं और वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होते और उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। मसलन सास बहू का रिलेशनशिप, सास ने सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया भर की, उसमें बाय नेचर उनके अंदर एक एलिमेंट ऑफ जेलेसी रखा हुआ होता है और वो जितना बेटे को प्यार करती हैं, कुछ कुछ सासें खास तौर
उतना ही बहू को वो टफ टाइम देती है। और बड़े प्यार से ब्याह के लाने वाली सास बहू की अच्छी खासी दुश्मन बन जाती है एट टाइम्स, और उसको पता नहीं चलता। शी इज एट सब, इतनी जेलसी हो जाती है सास के अंदर, उसको पता नहीं चलता कि किस वक्त वो बहू के साथ क्या कर दे। शी इज वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स। आई एम अ थेरेपिस्ट, मेरे पास लोग आते रहते हैं। सो एक तो ये इस किस्म का रिलेशनशिप। तो बाज़ औक़ात इसी तरह कोई नंदों के साथ भी भाग्य हमारा का कुछ इस किस्म। बाज़ औक़ात इसी तरह की कोई चीज, अगर कोई एक किसी की दूसरी शादी हो जाए, तीसरी शादी हो जाए, तो कुछ बीवियों का भी आपस में फिर इसी तरह के बिल्ट इन उसके अंदर पेन होती है इस रिलेशनशिप के अंदर। तो इसी तरह के कुछ रिलेशनशिप होते हैं विच आर बिल्ट टू बी पेनफुल। अब आप पर डिपेंड करता है कि वो तो है ना, तो हमने क्या करना है कदर, इस बात को गौर से सुनिए। एक चीज ऐसी है तो हमने उसको रिकग्नाइज, उसको डिनाई नहीं करना कि वो तो ऐसा नहीं है, ये नहीं ना। वी एक्सेप्ट कि अच्छा ऐसा है। जैसे आप कह रही हैं एक रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक, इसको हम कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, दैट्स रियलिटी ऑफ लाइफ। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको हैंडल कैसे करें। तो हम चाहते हैं कि आप इतने पावरफुल हो जाए कि उस रिलेशनशिप को भी अच्छे तरीके से एमिकेबली हैंडल कर सके। अगर आप हैंडल नहीं कर सकते किसी वजह से, तो उसके साथ इंटरेक्शन कम से कम कर लें, कम से कम कर लें इंटरेक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू। टाइम बहुत कम रह गया, अभी कोई वॉलंटियर इस वक्त नहीं है, तो मैं आप सबको मैं एक कह देता हूँ प्रॉब्लम। हमारे पास सिर्फ इस घड़ी के मुताबिक 7-8 मिनट्स रह गए, 1 घंटे का हमारा सेमिनार था। टाइम के गुजरते पता नहीं चलता। आई डोंट नो वेयर इट फ्लाइज दिस टाइम। ओके, कोई एक सिस्टम होना चाहिए, हम टाइम को थोड़ी देर के लिए तो रोक लिया करें, बट वी कांट। तो उसमें अभी हम इन 10 मिनट्स के लिए मैं कहूंगा प्रॉब्लम, आप अपना अपना प्रॉब्लम सोचिए, उसको एक नंबर दीजिए इंटेंसिटी का, एंड जस्ट गो अलोंग विद मी, जस्ट गो अलोंग विद। आई टैप करें जिसकी दिस कॉल्ड कराटे चॉप। दिस मैं कहूंगा प्रॉब्लम, आप अपना प्रॉब्लम सोचिएगा और मेरे साथ साउंड निकले, जो मैं साउंड निकाल रहा हूँ, यू कैन लिसन। Make this sound from your nose, this part of the, like a B का जो sound होता है। Even though there is this problem, say it in your own mind. Even though there is this problem, this is a special thing we are doing today. Come on, be with me. There's an opportunity, a great opportunity for you to be doing this thing with me. This problem, deep breath and learn it and apply it later on. Deep problem, this problem, very serious problem. Deep breath. I love myself and accept. Love yourself and accept yourself, others as they are, and the problem itself. It's a magic statement. Do it now with me. Come on. I love myself and accept myself. Love myself and accept little, little. Imagine the problem is getting little. Deep breath, deep breath. Love myself and accept myself. This place is called karate chop. You can tap either this side or this side, just the same. Love myself and accept myself. Very, very little. But keep making this sound. It's very meaningful.
Deep breath. Love myself and accept myself. Love myself. And now say, I am good, 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 good. I am good, good, good. I can. I do. Assertive communication. Yes, yes, yes. I love myself and I have high self-esteem. Yes, yes, yes. I can handle. Yes, why not? I am good, good, good. Thank you. Live in gratitude. I live in thankfulness to Allah. Thank you, Allah. Thank you, Allah. Thank you, Allah. And before you go to sleep, say thank you to Allah. Thank you, thank you. The whole night, let it be gratitude sleep. Thank you, thank you, thank you. Okay, nice having all of you together at this seminar. Wonderful, wonderful, wonderful. Fatma, you can sum it up, please. Thank you so very much, sir. Alhamdulillah, it's been such a wonderful session. हमने रिलेशनशिप मैनेजमेंट और assertive कम्युनिकेशन के बारे में इतना कुछ सीखा. हम लाइटर हो गए हैं, हैप्पियर हो गए हैं, स्ट्रॉन्गर हो गए हैं और आइंदा के वेबिनार्स के लिए हम बहुत मुंतजर हैं. हमें हर रोज ये मोमेंट्स चाहिए कि हम 1 मिनट में अपने आप को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फ्रेश और कैपेबल बना सकें. अपनी मेंटल हेल्थ और इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए इन्वेस्ट करना तो बहुत जरूरी है. कभी हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, कभी किसी ब्रांड को फॉलो करते हैं इस उम्मीद से कि वो हमें रिफ्रेश करेगा, ब्रेक मिलेगी, मजा आएगा. हालांकि ये तो बैंडेड की तरह काम करते हैं. असल हैप्पीनेस तो इन सेशंस में है जहाँ पे हम अपने आप को अंदर से हील करते हैं. तो अपनी साइकोथेरेपी के लिए अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं तो 10 दिनों बाद 31 मई को एक फुल डे वर्कशॉप है जहाँ पे पूरा दिन हम यही सीखते हैं कि हमने पहले से स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर, शार्पर, हैप्पियर कैसे होना है. उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है और अभी के लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है, तो आप जरूर रजिस्टर करें. कुछ हमारे फेलोज अल्हम्दुलिल्लाह कर भी चुके हैं और जो भी डबल माइंडेड है आई डू रेकमेंड कि इस दिन में आप जरूर इन्वेस्ट करें. बाकी सब खा पी के पहन के खत्म हो जाते हैं. ये वाला जो दिन है और इसमें जो कुछ सीखा है ये आपके साथ रहेगा हैप्पी मेमोरीज के तौर पे और न्यू इन्फॉर्मेशन के तौर पे. और इंशाल्लाह जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ सीखेंगे ये बिल्ड होती रहेगी. हर वेबिनार में पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और हर फर्दर लेवल्स में आपकी सर्टिफिकेशन इंक्रीज होएगी क्योंकि ये सर्टिफाइड कोर्स है. Inshallah, 31st May, we will see you there. Inshallah. Thank you so much, everyone. Allah Hafiz.